hope we continue like this जब तक हमारा लॉकडाउन है. आज एक्सटेंड भी हो गया है. So though it was anticipated, but मतलब like you know, but still we are going to make the most of it now and come up with new programs for you. तो जिन्होंने आज ज्वाइन करा है, बाकी सब तो जिनको पता है उनको मालूम है, but जो न्यू आए हैं, so from Mimoha Elder Care we've launched this Zoom TV. We know it, we call it as Mo TV, and we have some special engagement programs for our elders, क्योंकि इस टाइम कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है and बहुत सारी चीजें हमारी रुक गई हैं. So some form of socializing, some form of information we are trying to pass through this Mo TV. And हमारा सुबह 8 o'clock फिजियोथेरेपी सेशन होता है and सारी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं to keep yourself healthy, वो by various people हम लोग करते हैं. हमारे in-house डॉक्टर अनुराग हैं, plus we have physioactive team which comes regularly, and we come up with new ways of looking, giving you a healthy body and soul. 11 o'clock we have a doctor's talk where we come up with different topics, and जो भी आप लोगों के लिए relevant होता है, जो हमें लगता है कि as elders the kind of problems that you're going through, हम उनके ऊपर अलग-अलग डॉक्टर से बात कराते हैं. अगेन हमारे इन हाउस डॉक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, हम वो आते हैं रेगुलरली. एंड देन 4 o'clock we have a dietitian session जिसमें हम आपको डाइटरी टिप्स देते हैं so that you can be absolutely healthy, have good healthy food and feel more energetic. And 6 o'clock then we have an engagement program with you all, and we come up with different topics and we socialize here, we meet, we do a lot of gupshup, and चाय के ऊपर हम बहुत सारी चर्चा करते हैं. So I hope आप सब ready हैं अपने चाय के कप्स लेके and अपने बिस्किट्स लेके. अगर कोई पकौड़े खा रहा है तो बता दीजिएगा so that rest everybody else can also have it. So आज हमारे बीच में like I said, we've come up with a new topic which is Scientology, and इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. L. Ron Hubbard is the founder of Scientology, and he says that you are a spirit. You are your own soul. You are not a mortal. You can be free. Scientology is presumably one of the best new American beliefs to have developed in the previous century. But despite its success, what Scientologists believe and how they perceive the higher power, it is often misunderstood. The concept of Scientology, basically it lets you submit to a procedure called auditing in order to neutralize the injuries of life that affect your brain. A civilization without insanity, without criminals, and without war, where the world can prosper and honest beings can have rights, and where man is free to rise to greater heights. These are the aims of Scientology. I hope I'm correct, jo sun rahe hain, especially who are into it, Shelly and Mr. Ghosh. Yeah. So today we have with us somebody having more than 16 years of experience, though she looks very young. So she has 16 years of experience in the field of Dianetics and Scientology. Somebody through whom we will be having the opportunity not just to find out, but also experience a portion of these astounding procedures. So along these lines, let me welcome Shelly Shalini, who will be explaining more about this Scientology, the whole concept of it and what it means, and what the aim of this and how aim of Scientology is, and how it can actually help us in our day-to-day life. And whatever little bit that I was hearing from Mr. Ghosh, because he is also into it, and then we talked about this and he recommended Shelly to come here. So, it seemed to be a
very fast. Today we're just taking the first part of it just to make you understand what Scientology is, and then we'll take it forward in different bits and parts of what it actually means and how it can help us in different facets of our life. So Shelly, over to you, and we're quite looking forward to the session, and the Sure. stage is all yours now. Okay. A very warm All right. welcome to you. Yeah. And thank you Thank you for so being much. here. Thank you. Thanks a lot. And I hope you can hear me, all of you. Yes, yes, we can hear you. Okay, sure. Good evening to all of you. And as she gave such a nice welcome to me, I would also like to thank her for this opportunity and to have me on this platform. And I also like to thank Rajiv Ghosh and Ritu Batra and rest of the team and all of you to listen to me and allow me to tell you what I believe in and what my knowledge entails. Okay. So I'll just quickly, like she already gave you a very nice introduction, so I'll just add to it. I'm a counselor for the last 16 years and I have been into international training in the field of Dianetics and Scientology. I started really young, so fine, and that adds to my knowledge and experience. And I traveled around the world, like in US, UK, and Germany, parts of Thailand, Dubai, Sri Lanka last year. Just last year, I was helping a lot of people after, the trauma which occurred after Easter bombing. And I was with them heading the entire disaster response team and guiding them on healing techniques and training all the religious gurus, spiritual leaders, and monks and high priest Buddhist monks. And they were like very happy about this technology because it takes you to a very, very scientific journey. So coming back to the real topic, my topic is about power of mind. And this was introduced by Mr. L. Ron Hubbard. As she rightly said, she already gave a very, very basic conceptual understanding about the aims of Scientology and Dianetics. So I'll bring you back to Mr. L. Ron Hubbard. Mr. Hubbard was a nuclear scientist. He was a philosopher, very well-known philosopher of his own time. And he discovered in the field of mind, knowing the scientific background of nuclear physics and mathematics, he discovered deeper into mind to understand the true value of human nature. Like, why do we have problems related to life? Why are we facing difficulties? Why do we have why do we suffer, the emotional trauma and pains, and why we have all the things around us, and despite that we do not have a scientific tool to overcome these difficulties and problems. And that's where his research goes deeper and deeper, and he discovered this technology which came out in 1950 called Dianetics. And I would just like to show you his first book. So you have a little bit of a picture. This is the book by L. Ron Hubbard called Modern Science of Mental Health. And after he discovered mind, he realized that there are a lot of issues in life we are faced with, like day-to-day problems of business, work, children, relationship, marriage, everything entailed. He discovered Scientology. So it was called Science of Life. It's a science of life, and it very much goes back to the basics of natural universal laws and principles of the nature of the universe. And he studied a lot of Eastern philosophy, like he studied Vedas, he studied Chinese religious scriptures and Eastern religious scriptures. And he discovered that we had something very, very powerful, that is like the concept of soul. We believe in spirituality, we believe in the spirit, mind, and body concept. And that's where he had the major breakthrough, where he realized that if we can have the same spirituality and the scientific information combined, we can have a very, very powerful tool for the world. And that's how this was discovered, called Scientology. Scientology is the spiritual technology for life. I hope so far I was not too fast and understood. That's So very fine. thank you. Thank you. So I go back to the
point of making my point of that, I want to welcome you all in this topic of power of mind, especially to deal with this pandemic, the stress you are facing, and all of us are facing around us. And we see the news and we come across a lot of things happening around us, and we do have issues, whether we are directly involved with it or not. We know that it hurts, even if someone else dies, it hurts. It even hurts us because we are all emotional beings, and we think with our mind and we think with our soul. So yeah, we do believe in spirituality and humanity. We want to do social work, we want to help others and come out very strong. But the point is how to do it. That's where the role of us comes in. Like, how can we help you achieve that level? And that is what I'm here for. So since we already know that we have in our day-to-day life stress, anxiety, negative feelings, fear, depression, all kind of confusions. You get all these news all around the world, and you hear them obviously because you want to be like up to date with the knowledge and what all is going on. But when you get all the information gathered in your mind, yeah, so when you have this information gathered in your mind, what happens, it gets like like jumbled up like a ball of cloud, and it can have a power to affect you. Now that's where you have to understand the function of the mind, because I'll take you to the root cause of the problem. We all know that we have anxiety, depression, time to time, fears, and things like negative feelings, feeling low, not feel like doing this, we are confused. These are just the symptoms. I can always talk to you about the symptom and try to help you, okay, do this, do that, do this. But here I'm trying to give you a little bit deeper understanding on why it is happening. Because the moment you understand the why, you become the doctor of your own mind. You know about the body. We all know about our body and how we should operate, and you have your doctors, they are helping you out. The combination of spirit, mind and body is equally important, because if you know the body, if you know what is above the body, which is mind, and what is above that is you, the spiritual being. If you know the sequence, your ability to deal with anything becomes so simple and so easy and so enjoyable that you can stay forever young and happy and do good in life and help others, because that's the ultimate goal, to help. Okay, so now I just want to make sure that this part was also understood. No, definitely, you're talking in a very simple language. We can. Yeah, if there's any question, I would like that they can ask me, Ritu. I think you're going beautifully, extremely well. You're speaking extremely well. And the joy on your face reflects that you're happy what you're trying to talk to us. Yeah, yeah. Wonderful. Thank you. Yeah. Okay. So anybody who wants to ask something as of now, otherwise she will be taking question answers in the end. But in case any query at this point of time, I guess you're a good teacher. They're understanding everything. Okay, I'm very happy. All right, so I'll continue. So we all act according to our life scenarios. Let's say if you go back in time, how do you operate now in present moment? You operate with the knowledge you have gathered in school, your college, your experiences, your relationship. Everything has given you some kind of understanding how to deal with a problem. If there's a problem, you know what to do, because okay, I studied that in school, I had that in my college, I learned it from my guru, or my wife gave me this advice which worked very well, or my children are doing very well. So our understanding is all based on what you have gathered so far in past. And that's how you operate. Mind collects the information and it gives it back to you when you need it the most. Now, what happens in such kind of pandemic or such kind of a disaster?
you have to understand that mind also has a way to take everything on the subconscious level, especially which is connected to trauma and pain, or anything which is physical or emotional pain, because we on a conscious level can't face it. It is so painful that mind has a tendency to shut down for that moment, and everything goes on the unconscious and subconscious level. And that's where the problem begins, because whether you want it or not, every time when you are in pain, when you are in trauma, when it's physical or mental, or loss of someone very close, or death of someone, just the news of death of someone can put you in the state of numbness or little bit of unconsciousness in that moment, where all the information goes inside the subconscious mind. Now I'll go a little bit more elaborate on this part for you all. And I like to give you one example, that you compare your mind as a computer. You all have a personal laptop or a computer you deal with and work with. And similarly, you have to compare your mind as your personal computer. Now, if you have to look into all the pictures or albums of your past vacation, wherever you were with your family, spending time with children, birthday parties, what do? You go on the computer, you click, okay, this is the album for my anniversary album. Okay, I give a click, and all the pictures would show up. And similarly, if it's a birthday party, all the pictures would show up. So same way, your mind collects each and every information in the form of images, imprints, impressions, with all its senses and perceptions. It's like a three-dimensional computer. Like when you look at the computer, it is two-dimensional. You can just visualize, you can watch it. But here, the mind is recording everything is three-dimensional, which is you can hear, you can feel, you can even recall the smell, the touch, you can recall everything what was going on in that point of time in your life. And that's where I'll do a little demonstration with all of you, that like I already give you this analogy, that compare it with a computer. So think about a moment. Imagine your mind is your computer, and I want all of you to close your eyes and think of a moment when you had a very enjoyable vacation trip with your family. You have to just think, go back in that time and look at that moment, experience that moment again. And you can take a few minutes for that. That's fine. You have to look at that moment, that experience where you were with your family, enjoying your vacation or spending time, any good moment where you had a lot of celebration. Think of the people involved. Think of what you were doing at that time, the food you were eating, the colors around you. What do you hear? What is the sound in that moment? What are children doing? Just take a look. Okay, Ritu, how do I know if they did? I will just, once we finish with this, they can just talk about, Okay. Yeah. Talk about it if they really went back into their, that time of, like when, whatever they enjoyed at that point of time. Okay, sure. All right. So I continue. So once you have looked at that picture, I just want you to feel the emotion involved in it. What was your emotion? Were you happy? Were you like overjoyed, exhilaration, like cheerful? What was your emotion involved in it? Okay. Now carefully focus on now looking at that. Yeah. Hello, Shalini. Yeah, hi. मेरा ही कहना है कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी बोलिए. सरपटी इंग्लिश में तो बोल रही, हिंदी भी बोलिए, इसमें जरा क्लियर हमको भी समझ में आए. Okay, ठीक है. I'll give that in Hindi. ये demonstration मैं आपको हिंदी में बताती हूँ.
मैं चाहती हूँ कि क्या ओके थैंक यू। या सो जैसा कि मैंने अभी तक आपको मन के बारे में बताया है, क्योंकि आविष्कार मिस्टर हबर्ड ने की थी 1950 में, और उन्होंने देखा कि जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया जाए तो आप उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अपनी किसी भी दुविधा, प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप समझ तो आप अपने प्रॉब्लम्स के खुद सॉल्वर हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आप उसे खुद खत्म कर सकते हैं बहुत हद तक। आप अपने शरीर की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आप मन की चीजों को भी देख पाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत हद तक, और लगभग पूरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। तो इस वक्त जो मैंने एक्सरसाइज करवाया छोटा सा, कि आप एक समय के बारे में आंख बंद करके सोचें जब आप अपनी फैमिली के साथ थे, किसी अच्छे मोमेंट में, वेकेशन या बर्थडे पार्टी या कुछ भी, पूजा हो, कुछ भी, कुछ अच्छा मोमेंट जहां आप उनके साथ थे, उन्हें याद कीजिए, उस मोमेंट में जाइए, या याद करें कि वहाँ क्या चीजें थी, क्या खाने को था, टेस्ट कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे, उस बारे में आप सोचिए और देखिए कि आपको आपका माइंड क्या इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि हमारा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर है, उसमें डेटा रिकॉर्ड होती है, वैसे माइंड में रिकॉर्ड होते हैं हमारे सब कुछ। तो आप उस मोमेंट में जाके एक बार सोचे, तो फिर मैं आपको अपना दूसरा सवाल बताऊंगी। I'm sure in the meantime the other people have already gone through this. तो कोई Great. बताना So, चाहेगा of yeah. how Please go ahead. Sure. मोना आंटी आप बताना चाहोगे? आप म्यूट पे हो। हाँ, हमें सब कुछ याद है सिंस आई एम विडो। तो मैंने सब कुछ अपने पति के साथ जो समय बिताया। एक बार गोवा गए थे हम लोग, माय चिल्ड्रन पर स्मॉल देन, तो बहुत ही मजा आया था और पहली बार हमने समंदर देखा था एंड इट वाज रियली एन एंजॉयबल। It was Christmas also. So wow. It was something new for us क्योंकि Christmas पे we were all covered with coat, muffler and all. Yeah. But then I was wearing nice sari, cotton sari. These things I remember, and the food, Very of course, I like because I don't everywhere fish का smell था, and first time समुंदर देखा और बच्चे भी खूब नहाए और enjoy किया. This was this. And I remember each and every moment with him. But this was one, when you said close your eyes, so this was one moment which I... Very good. Wonderful. Wonderful. That's fantastic. So, see, I just want you to understand that when you looked into your mind, the mind gave you pictures. Yeah. And then mind gave you the memory of that time. You know? Vivid memory. Really. Exactly. Vivid memory. So, mind works exactly like a computer. The memory you want from mind will come out in front of your eyes, you know, and that's how the mind functions, whether it's a good memory or a bad memory, you know. Yeah. But the problem comes when there is a bad memory which is recorded in your subconscious or unconscious level. That can come anytime, whether you want it or not. It will keep coming back to you. Yeah, because you don't have a conscious control over it to switch it off. Exactly. Right? So now you all looked at the picture into your mind. Now you have to ask yourself, who was looking at that picture or that experience? आप सबने अपने experience का अनुभव किया, तो आपको ये देखना है कि उस experience को कौन देख रहा था? इस वक्त कौन देख रहा था? Yeah. हम खुद देख रहे थे? Absolutely, yeah. You were looking at it, right? Yeah. So you were the one looking at it. So this is the message which I'm trying to give, is that until and unless you operate your computer will not work. लोग कहते हैं ना, हमारे मन से हम परेशान हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, हम बहुत डिप्रेशन में चले गए, वो सब कुछ आपके अंदर कहीं ना कहीं आप उसे ऑपरेट स्विच ऑन कर रहे हैं. When you switch it on,
only then it has a power on you. But when you decide that no, I can deal with it and it will not come over me, I will not allow it to come over me. So there is a way. Sometimes खुद से भी हो जाता है, कई बार हमें बहुत ऑडिटिंग की भी जरूरत पड़ती है, जहां हम वन ऑन वन बैठ के आपको सेशंस देते हैं जिससे आपको उस चीजों से बाहर निकालने के लिए हम मदद करते हैं, वहां पे काउंसलिंग काम आती है. लेकिन बेसिक फंडामेंटल ये है that mind has the power over your body, and the one looking at it is you, the spiritual being. You can call it the living being, or you can call it soul, or you can call it spirit, या उसे आप आत्मा. Yeah. And put this thing. Even my internet was not coming, so I switched off the Wi-Fi and I went on my own phone. Okay. All right. So you want me to give you back again? कोई नहीं, Shelly, you can continue. Okay. So शालिनी जी, yeah. एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता था. जरूर. ऐसा है कि we had gone to Singapore. ए फैमिली अबाउट 15-16 मेंबर थे, प्लस एक तो बाहर के लोग थे. एक हफ्ता का पैकेज था. 3-4 दिन तो हमारे मजा आ गया वहाँ पे घूमने का, मिलने का, हर चीज को देखने का. वी वर सो हैप्पी, सो डिलाइटेड. एक टाइम ऐसा आया कि जब हम एक हमारा जो ग्रुप का मेंबर था वो किसी दुकान पे गया होगा और वहां से प्रॉब्ली ही लॉस्ट द रूट. ओके. और उस टाइम पे जो हमारे दिमाग में आया, माइंड में, तो हमें समझ नहीं लग रहा क्या करें, क्योंकि इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू कांटेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज ना उनके पास सिम था ना हमारे पास था. वी वर नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट. एक्चुअली वी हैड डिसाइडेड एवरीबॉडी विल रिमेन टुगेदर. पर वो शायद थोड़ा सा मैकल मे बी प्रॉब्ली इज गोइंग टुवर्ड द टॉयलेट एंड फ्रॉम देयर ही लॉस्ट द रूट एंड वाज नॉट एबल टू रीच आवर ग्रुप. For about half an hour, 40 minutes, we continued to, look left and right, and we were not able to locate. तो उस टाइम पे जो हमारी माइंड की सिचुएशन थी, it has gone back to worse. Exactly. And we didn't know really how to do with it. तो वहाँ पे वो चाइनीज वगैरह थे, उनसे we were also not able to talk to them, and nobody would, जैसे इंडिया में तो एक दूसरे को थोड़ा सा मदद करने वाला हो जाता, वहाँ पे जाके there is nobody even to help you. ऐसे टाइम पे हमारा जो माइंड का कंप्यूटर है, इवन दैट कंप्यूटर आल्सो फेल्स. एब्सोल्युटली. उस टाइम पे हम कंप्यूटर को कैसे उसे एक्टिवेट करें और क्या करें उस टाइम पे. although the end was not very bad and came to be a success, that finally the person joined and we were so happy, delighted. रात को गए, दारू वारू पी, खाना वाना खाया, तो everything went very comfortable there. और उसके बाद then returned home there. आप मेरे को ये बताओ कि उस टाइम पे अपने माइंड को अगर हम उसको कहते हैं ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सब कुछ फीड तो हो गया, सब कुछ, everything has come in our computer there, but computer is not able to give us the answer as to what we should do. तो आप क्या कहते हो कि ऐसी चीज में आंसर कहाँ से आएगा? Absolutely. See, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले I was trying to tell you, मैंने जो आपको बताया था कि एक माइंड आपका कॉन्शियस माइंड होता है. वन पार्ट ऑफ द माइंड इज कॉन्शियस माइंड, जो हम कहते हैं डायनेटिक्स के टर्म में एनालिटिकल माइंड, और एक पार्ट है आपका अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव माइंड. वो तभी काम करता है जब आप किसी तरह की मुसीबत में होते हैं, पेन में होते हैं, या डिफिकल्टी होती है, एक्सीडेंट, इमोशनल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ पेनफुल थिंग, रिएक्टिव माइंड स्टार्ट्स टू वर्क. तो जैसा आपने एग्जांपल बताया, उस वक्त चूंकि आप लोगों के साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, एक शॉकिंग एक्सपीरियंस हुई, आपका फ्रेंड एकदम से गुम हो गया, कोई भी होगा, मैं भी होंगी, तो आई विल बी शॉक्ड एट दैट मोमेंट. तो उस वक्त आपका रिएक्टिव माइंड काम करना शुरू हो गया, और इसी रिएक्टिव माइंड को कंट्रोल करने का समाधान मिस्टर हर्बर्ट ने डायनेटिक्स के थ्रू बताया है. क्योंकि जब तक आप एनालिटिकल स्टैंडर्ड कॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो तो आपको हेल्प करता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो हर तरीके से आपकी मदद करता है. लेकिन जब जब ऐसी पेनफुल इंसिडेंट होती हैं, तो रिएक्टिव माइंड एनालिटिकल माइंड को शट डाउन कर देता है, वो ओवर पावर कर देता है उस पर,
और जब वो ओवर पावर कर देता है तो हम एनालिटिकल माइंड के फंक्शन को चाह के भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रिएक्टिव माइंड फंक्शन करता है, वो वही देता है जो वो देना चाहता है। और यहीं पे आती है काउंसलिंग और ऑडिटिंग का फंक्शन, क्योंकि हम अगर आप किसी के माइंड को उसके रूट कॉज तक प्रॉब्लम के ले जाएं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव इमेजेस अगर उनकी लाइफ से हटा दी जाए, बैड एक्सपीरियंसेस, बैड एनर्जीज हटा दी जाए, तो ऑटोमेटिकली ये जो एनालिटिकल माइंड है ये ऊपर आने लगता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसी एक्सपीरियंस होती है और एक ऐसा स्टेज आता है जब हम रिएक्टिव माइंड को पूरी तरह से वाइप आउट कर देते हैं, स्टेट को क्लियर कहते हैं, स्टेट ऑफ क्लियर, जहाँ पे सिर्फ एनालिटिकल माइंड फंक्शन करता है और बैड एक्सपीरियंसेस को कोप करने की पावर होती है एनालिटिकल माइंड में। आपके पास एक बैड न्यूज आया, बैड एक्सपीरियंस हुआ, इमीडिएट शॉक जरूर लगेगा क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल बीइंग है, लेकिन उसे कैसे डील करके आप उससे बाहर आ सके और आपके माइंड में वो पेन ज्यादा समय तक नहीं बैठा रहेगा। मेमोरीज इरेज नहीं होंगी, आप अपने लव्ड वन को कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन उस पेन में, उस दुख में आप परेशान जिंदगी भर नहीं होंगे। यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को याद नहीं करना है या उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, नो वे। एवरीबडी वांट्स यू टू रिमेम्बर देम इन अ हैप्पी वे। सो दया मैं आपके लिए फिर कुछ पर्सनल प्रोग्राम भी कर सकती हूँ सेपरेटली, यू नो, जो आप मुझसे क्वेश्चन कह रहे हैं, बिकॉज देयर आई कैन हेल्प यू. But in this, I can't go much in detail about auditing because I want to give you a little bit more on overall concept of mind. नहीं सर, इतना बता दो कि हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए था। अच्छा, उस टाइम पे ठीक है, उस टाइम पे आपको ऑब्वियसली आपको जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो लेने हैं कि वो कहाँ जा सकता है. You have to find a spot, find a place where you can just calm down just for a moment with your family. कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना था जहाँ पे कोई शोर शराबा आपके पास ना हो, आप एकदम काम डाउन हो सको 1 मिनट के लिए, और उस वक्त आप उस प्रेजेंट टाइम में रह सको 2 मिनट के लिए कि हाँ, पहले आप समझो कि हुआ क्या मैं इस वक्त, और लुक अराउंड यू. किसी भी चीज को देखो उस वक्त, आप लोग जा रहे हैं, आपके आसपास गाड़ी चल रही है, सब चीज को गौर से देखें आप उस वक्त, और पूरे ध्यान और अटेंशन से देखें जब तक कि आप फुली काम डाउन हो जाए. और जब आप एक बार काम डाउन हो चुके हैं, देन यू टेक एक्शन. ओके, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. मुझे पुलिस को कांटेक्ट करनी होगी, मुझे कॉल करना होगा, लॉस्ट एंड फाउंड में जाके कंप्लेन लिखवानी होगी, और मे बी लेट्स टेक आउट द नंबर. ये सब आपको एज अ सेकेंड स्टेप करना है, बिकॉज यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बैडली. अगर आप ही हार्म हो जाएंगे, आपको ही कुछ हो जाएगा, तो आप किसी को नहीं बचा पाएंगे. You have to be totally in your control. You get me? We got it already. मेरा कहना है कि heavy damn thing fails. What happens then? You tell the police, you tell the security people, you ask so many people. आज 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, and you are a country, away from your own motherland. Yeah, I can imagine. You are in a state of loss. और स्पेशली वो है कि जब उस ग्रुप के अंदर एक भी मेंबर जो है, तो आपका जितनी अच्छी यादें होगी वो 2 मिनट में आप मिट्टी में मिल जाती है. एब्सोल्युटली. और वो आपका उस वक्त, वो तो सर्टेनली अप्रिशिएट तो हर इंसान करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए. तो मेरा वही देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअली हम उस टाइम पे स्पिरिचुअली कोई भगवान की पूजा, ये करना वो करना, ऐसा काम तो करने से कुछ नहीं होने वाला ना. नथिंग इज गोइंग टू हैपन दैट वे. तो हमें तो ये है कि वी शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. इधर उधर घूमो, एक जाना घूमने जाता है, वो दूसरा वो गायब हो जाता है, कोई और जाता है, क्योंकि दूसरी जगह पे गए हो. इंडिया में तो सब काम जाते हैं एक दूसरे को, बाहर की जगह में जानता नहीं, दूसरे को मदद करने वाला कोई नहीं होता. बिल्कुल, बट आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमें कैसे डील करना है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो अच्छे के साथ जब बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, वेदर इट्स इन अ फॉरेन लैंड और इन इंडिया, द पॉइंट इज उस टाइम तो हम लोग करते हैं. आप भी स्पेशली डिफेंस से रहे हैं, तो वी आर प्रोग्राम्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन. But then yes, it leaves a bad scar, and how to get over that bad scar is what we are discussing here. That how Scientology can help in covering up this bad scar and leaving only the happy memories and not concentrate on the the bad thing that happened.
So am I right, Shelly? Yeah, and also he's right, because the higher once your mind is more clear, once your mind is out of any such painful experience, then automatically your capacity to take any bad thing at that very moment is also gets strengthened. You can deal with it, you know, you will not get so badly affected, and you'll be able to solve it through your immediate mind will give you solutions. वो स्टेज आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, उस स्टेज के लिए खुद पे हमें काम करना पड़ता है. That is what I'm trying to tell him. शैली, मैं Right, अविनाश so बोल रहा we, हूँ. Yeah. शैली, मैं अविनाश बोल रहा हूँ. Can I answer some of those questions which Mr. Puri Yeah, had? absolutely. Yeah. आपने कंप्यूटर की बात कही, वो बहुत सही बात है कि अनलेस कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसको आप क्लियर करने लगिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लाइट हो जाएगा. Absolutely. कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है which is switch off and switch on. साहब जो पूछ रहे थे, I can understand. I've also had similar experience in a foreign country. Yeah. But what you tried to emphasize, वो बहुत सही कहा, to keep your mind cool. Because सबसे important है, आप ही अगर बीमार हो गए, तो आपका संतुलन हट जाएगा. You won't be able to think properly. Right. But life का, because what motivation which you do, I also try and talk to youngsters. I'm a much older person, but my experience is obsolete. If I start thinking कि मेरा 50 साल का experience है, वो 50 साल पहले लिया था. Avinashi, there is not one person who gets involved. There are many other people in a group. अगर 15-16 का group है, I can imagine, sir. मेरी अगर मैं involved है तो दूसरे भी involved हैं. Point ये कि पूरा group involved हो जाता है, तो उस टाइप की situation थोड़ी सी बिगड़ जाती है. I understand. Although we don't want, Shalini, you are able to give us the lesson some other time also, because this is no time for me to, probably exactly. So we'll discuss just on this issue. Correct, and we would like to close this matter now, so that you can proceed further. Thank you very much. Sir. Thank you. Okay. Pleasure. All right. So my next point, thank you so much. Basically, my next point was actually coming back to that, what you brought it up. Because now you are right कि हाँ, faith एक चीज होती है, spirituality and everything. Can I interrupt you, Shalini, please? I have no question to ask, but our life has been quite different. Right from day one, we are on the road. Yeah. With the kids, chasing them, passing them. They do in school time also. They used to go for certain outings like NCC and other things, and we used to follow the bus where they were going. That's another word, we have been very possessive. I don't know whether to call this as a negative point, to call it as a positive point, I don't know. It went through all the years, the last 50 years. And ultimately it proved that probably we did the right thing. And we are pretty comfortable. I'm very, very happy in hearing you. Very interesting. I hope, I don't think I would need any help on this issue. If you would like to advise me, otherwise, yes, I would be too happy to hear you. Thank you, Shelly. Okay. Right. Thank you so Thank much. you so much. And I think we'll just continue with what you have to say, Shelly, because we're running a little short of time then. So Sure. we'll take the question answers a little later. And we'll just let you finish with what you have to say. Okay. When the subject is very interesting, Rituji, these questions will continue to come. No, I know. I understand. I must compliment Shalini in the way that. I must compliment Shalini for the way that she is trying to express. Wonderful. Yeah, thank you so much. Please carry on. Please carry on. No, I know, but मुझे तो time देख के भी सबको थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा. Otherwise, she will not be able to complete and tell us exactly what she wants to. So that is why I'm sorry, but I have to moderate and kind of cut short the discussion. Yeah, she's very good with that. Thank you. So initially we'll continue. Not at all. Please, we will have this discussion. We would love you to participate. बस यही है कि थोड़ा सा ये अपना part वो कर लें. Then we will have this discussion. And everybody can then give their own inputs of what they feel about what she has said, and how we've experienced things in life.
Yeah. So Shelly, over to you, please. Yeah, sure. So Thank I'll you, just Shweta. Go ahead. yeah, you're most welcome. So basically, what my main purpose of showing you that example was that so that you can visualize that how powerful your analytical and reactive mind is. You know, when your analytical mind stores all the good information, pleasure moments, and when you recall of them, you feel very happy. You look at it and you know, I'm the one looking at it. I'm the spiritual being. Similarly, reactive mind is so way more powerful, which is the root cause of so many problems we are facing in our humanity at this present moment, that irrespective of where you belong, what your tradition or what your upbringing or your knowledge or education is, we get succumb is like we give in to the reactive mind. We at that moment, like he was trying to tell me the experience of his friend, how disturbed he became, which is true. उस मोमेंट पे अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, you'll be thoroughly disturbed. But this is also, you have to realize that at that moment your reactive mind took over you. Your analytical mind was no more in control. The reactive mind took over your whole existence, and everything you were trying to do was out of the response of the reactive mind rather than the analytical mind. Same thing when you do it from the state of mind of the analytical and conscious mind, your way of operation would be different. You will take less pain to yourself. You will hurt yourself less, mentally or emotionally or physically for that matter. तो इस बात को मैं यही समझाना चाह रही थी कि our mind has a way to give a response to a certain thing, which Mr. Hubbard also discovered in Science of Survival, was his second book, where he goes deeper about how people respond to various levels in day-to-day life scenario. Like if you look at thing and you respond to it happily, if you look at thing you get very angry, if you look at thing you feel sad, or if you look at something and you feel like crying, so these are the various responses we all go through up and down. But why do you look at something and you think of happiness, and why do you look at something and you feel sad? Like I gave you an example of a very nice vacation trip. बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी experience बाहर आई, लेकिन उनके लिए एक painful experience भी बाहर आई, which can make him sad or go down in fear कि भगवान ना करे मेरे साथ वो दोबारा हो, मैं नहीं चाहूंगा मेरे साथ वैसा हो. पर वो fear क्यों आया आपके अंदर से? Fear very natural. Fear is very natural to come. But what you have to understand that when we get stuck on the lower level of our tones, which could be fear, anger, apathy, yeah, grief. These are the four most very lower level of our tones. जब हमारे साथ बहुत लंबे समय तक हम इस लेवल पे फंस जाते हैं, तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि रिएक्टिव माइंड ने पूरी तरह से आपके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, और वहां पे आप you lose touch with your analytical conscious thoughts, you lose touch with your spiritual thoughts, you lose touch with your divine faith, everything. Because on a higher level of spirituality, there is called telepathy. अभी भी ऐसे लोग हैं that through telepathy they can tell you कि वो बंदा कहाँ है, मैं उससे help कर सकता हूँ. और अगर आप उस तक नहीं भी पहुँच सकते हैं, तो you can have a state of your mind so strong कि मैं अगर उस जगह पे होंगी तो मैं सोचूंगी ठीक है ऐसा हुआ है, but my mind knows my intention is so strong कि कुछ भी होगा, I will find him, no matter how he will come back to me in front of me. कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी फ्रेंड को आपने याद किया, उसने फोन कर दिया. कई बार आपने सोचा कि आपके बेटे की जॉब लग जाए, उसकी जॉब लग गई. कई बार आपने सोचा वो अच्छे एग्जाम से पास कर जाए, बच्चे एग्जाम से पास कर गए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, वो बढ़ गई. कहीं ना कहीं योर पॉजिटिव इंटेंशन इज वर्किंग ऑन देयर लाइव्स. आपकी पॉजिटिव इंटेंशन इक्वली मैटर करती है. वैसे ही अगर आप इसी पॉजिटिव इंटेंशन को होल्ड कर सको डिफिकल्ट टाइम्स में भी, तो वो भी वर्क करेगा. उस वक्त भी वर्क करेगा कि अगर मैं जानती हूँ कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड गुम हो गया है या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो आई विल नॉट लेट दैट थिंग suffer. He or he should not suffer. Somehow my mind will be so strong to give a positive intention. उसको आप positive vibrations भी कह सकते हैं या intention भी कह सकते हैं. But अगर आपका, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कंप्यूटर और हार्डवेयर के बारे में, जितना ज्यादा आपकी ट्रबल शूटिंग हो चुकी है कंप्यूटर या लैपटॉप की, जितने ज्यादा वायरसेस हट चुके हैं उसमें से, उतना आसान हो जाता है किसी भी पॉजिटिव इंटेंशन को फ्लो करना बाहर की तरफ यूनिवर्स में.
तो यहाँ पे हम वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने माइंड को कैसे इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक ला सकें. We are trying to cultivate the God in you because we all are part of God. हम सब में एक God का अंश है. Whether you believe in, I'm not saying you have to believe in God to follow what I'm saying. What I'm trying to say that we are all living beings. हम सब अग्री करते हैं कि हमारा एक शरीर है, हमारा एक मन है और हम जीते जागते प्राणी हैं और हम लाइफ एंड डेथ इसका पार्ट है. आज जिंदगी है, कल डेथ होगी और वो सबके साथ होना है. लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, हम जी रहे हैं, उस समय तक ये जो एनर्जी आपको जिंदा रखती है सरवाइव करने में, वही एनर्जी आपको उतनी शक्ति भी देती है जो सिक्स सेंस कर सकते हैं, आप टेलीपैथी कर सकते हैं और आप ऐसे लेवल ऑफ क्लैरिटी, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच सकते हैं कि रिएक्टिव माइंड चाह के भी उसे टेक ओवर ना करे. कि हाँ, पेनफुल चीजें होंगी, दुख अंदर अंदर लगेगा, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स में यू नॉट जंप आउट इन फ्रंट ऑफ अ ट्रक टू प्रोटेक्ट समबडी. आप देख रहे हो एक तेजी से गाड़ी जा रही है और भाग गया है कोई, तो यू विल ट्राई टू एज फास्ट एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम हाँ, हो सकता है कुछ सर्कमस्टांस में आप कर भी लो, लेकिन how fast your mind responds to a given scenario is how well your analytical mind is functioning. That is equally important. कि हमारा पर्पस ये है कि हम रिएक्टिव माइंड को खत्म करें. इस पूरे स्पीच में मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप रिएक्टिव माइंड को खत्म कर लें या उसे खत्म करने पे काम करें, तो आप खुद में भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे अपने एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को पहचानने में और उसको देख के. So first thing you have to do is, first and foremost, is take care of your health. जैसे डॉक्टर्स कहते हैं दवाई खाएं, टाइम पे मील्स लें, take a lot of vitamin C, lots and lots of vitamin C in your food intake and zinc, especially during this time of problem. You know, the viruses and germs can only affect you when you are lacking in your immunity and especially the nutrition like vitamin C. तो वो आपकी स्लीप 6 से 8 घंटे होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. और नहीं भी 6 से 8 घंटे हो तो जितनी देर भी आप सब बिल्कुल साउंड स्लीप हो और ये इन सब चीजों के लिए ये सब कवर कर लिया, then you start working on mind. You know, you should be well fed, well rested. You can do pranayam, yoga from home. Those things will always help you. लेकिन हमें रूट कॉज तक पहुंचना है प्रॉब्लम के, और उस रूट कॉज के पहुंचने के लिए we do personalized counseling. But as a regular exercise you can do from home is, आप किसी भी जगह पे बैठ जाएं जहां आपकी बालकनी दिख रही हो या बगीचा हो या पेड़ पौधे हो आपके सामने में या अपने कमरे में ही सारे सामान पड़े हुए हैं. Yeah. Background noise. Please carry on. Okay, so you can look at that. You start to look at things. आप चीजों को देखें. अगर आपके सामने एक कंप्यूटर ही पड़ा हुआ है, ये टीवी है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये एक एक करके उन चीजों को गौर से देखें. चुपचाप आप एक जगह पे बैठ जाएं, टेक अ डीप ब्रेथ और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट्स, as long as it takes. Just watch, look at it carefully. वो कैसा दिखता है, कलर क्या है, क्या चीज है, what is it in front of you. See if it is real to you. क्या वो चीज आपके लिए रियल है या वो बस एक इमेज की तरह दिख रहा है. तब तक देखें जब तक वो आपको रियल दिख रहा हो, चाहे वो पत्ते हो, पेड़ हो, हाँ, और छोटे छोटे खिलौने पड़े हो, कुछ भी हो, डेकोरेटिव पीसेस हो. But look at it. Do it as an exercise every day for 10 to 15 minutes. आप कोई एक्सरसाइज भी अगर नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, if you just do that for 15, 20, 25 minutes, तब आप अगर इसे करें. Nothing. As I said, कई बार पीछे से किसी का Okay. होता है तो I'm वो so very sensitive to the. Yeah, I thought somebody is asking. So आप ये एक्सरसाइज तब तक करें जब तक कि खुद से अंदर से आपको एक खुशी महसूस हो, कुछ अच्छा सा रिलैक्स महसूस हो या खुद से मुस्कुराहट आ जाए या आपको लगे कि मैं इस टाइम में हूँ. व्हाट इज द टाइम नाउ. अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, मैं इस वक्त हूँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट है उस एक्सरसाइज को एंड करने का, जब अंदर से आप थोड़ा काम फील कर रहे हैं. दिस एक्सरसाइज इज डिजाइन्ड बाय मिस्टर हर्बर्ट. ये रेगुलर बेसिस पे हम खुद भी करते हैं. आई ऑल्सो डू इट. वी कॉल इट अ लोकेशनल सेशन, लोकेशनल असिस्ट. This is assisting you to feel better in present time. क्योंकि the more you are in present time, you are in control of your mind. Your power of mind will only work when you are in control of your mind. So once you are in control of your mind, all your chakras, all your indriyas, या जिसको आप nirvana, state of nirvana जो बुद्धा ने कहा,
what you're trying to achieve is you're trying to achieve the pure power, pure energy of your soul and your mind over your body. हम अपनी pure energy, power of our soul, you know, spirit, power of you, basically we don't say spirit, that is you and me. I have a body, I have a mind. My mind is a computer, it will function. हाँ ठीक है, reactive mind है, painful experiences हैं, but I know how to deal with it. That is the whole purpose of Dianetics. And it goes very, very scientific, step by step. Like the other gentleman, he also mentioned about possessiveness. In a positive way, it's really good if you're caring and you're very, very possessive and helpful and trying to care for your family, rear them well. But if someone uses it to hurt someone else, then it goes on the negative tone. So as long as it's on the higher tone, positivity, you know, freedom of speech, freedom of expression, free flowing information, then it's great, perfect, then you're very good. And other than that, हम सबके साथ जो चीजें होती हैं पास्ट में, be it accident or loss of someone, you know, or even birth is a very painful process for all of us. तो अगर आप कहें कि आपके reactive mind हो ही नहीं सकता है, वो बात गलत होगी, क्योंकि हर कोई जिसने जन्म लिया है वो बर्थ प्रोसेस माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी उतना ही पेनफुल होता है, और उस रिएक्टिव माइंड का रिकॉर्डिंग अंश वो आपके रिएक्टिव माइंड के कंप्यूटर या अनकॉन्शियस माइंड में जा चुका होता है. तो कई बार चीजों को आप रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से भी, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपने कभी नहीं सोचा होगा, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे वो कलर पसंद नहीं है, उसने ऐसा क्यों पहना हुआ है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कहाँ से आ रही है. वो कई बार आपके बर्थ से आ रही होती है, कई बार बिफोर बर्थ से आ रही होती है. So that is something we can always discuss in the next session. Like Ritu said, you know, we have very less time left. So it's a very interesting topic and I would cover more and more with you on the next session. But I want to leave some time for question and answer. But the final point which I'm trying to make here is we are trying to cultivate the God in you, the power of your soul, the power of your mind to the level where you can decide to agree or disagree to any difficulty, germs, or such illnesses, you know, anything which comes to you in a physical form. एक लेवल आता है कि अगर आप उसे डिसएग्री करना शुरू कर दें कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकता है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड इन अ सर्टेन वे, तो वो चीजें बहुत हद तक कम हो जाती है. आपको डॉक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब वो बीमारी आप तक पहुंच चुकी होती है. अगर उस बीमारी को पहुंचने के पहले ही उसकी जड़ से, रूट कॉज से उस प्रॉब्लम को, उस थॉट को आप डील कर लें, तो आप बहुत हद तक उस बीमारी को रोक सकते हैं. यू कैन फाइनली डील विद इट. So in current scenario, one more point which I like to make is, हम हमेशा आप देखेंगे कि न्यूज चैनल लगा के आप देखते हैं रेगुलरली, you know, this news, that news, this news, that news. Mr. Hubbard का कहना है कि the more you watch news, the more you watch negativity, your tone starts to drop from positive to negative to negative to negative. आप देखें न्यूज, as long as it keeps you informed कि हाँ ये हुआ, ऐसी changes आ रही हैं, these are the regulation, these are the rules. Other than that, don't watch the news for a few days. Just don't watch it, you know, because watching the news you can't do anything. आप बैठ के ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहे समाज के लिए. जितनी देर आप न्यूज देखेंगे, obviously you are adding to your reactive mind. आपके reactive mind में और negativity जा रही है on a constant basis with all its pictures and all its senses, sense of touch, smell, sight, everything. वो साथ में सब चीज के साथ जा रही है आपके reactive mind में. तो आपने ये देखना है अपने आसपास, थोड़े समय के लिए न्यूज़पेपर ना पढ़ें, न्यूज ना देखें, फिर देखें कि कोई ऐसी चीज आपके आसपास जो थ्रेट नहीं है, जो आपको थ्रेटन नहीं कर रही है. हाँ ये तो ठीक है, इट्स प्लेजेंट, इट्स अ नाइस पेंटिंग, दैट्स अ बर्ड चर्पिंग, oh that person is helping someone else. Watch, look at these things around you which is not being a threat to you. Do it as an exercise. ये बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है. अगर आप 5 मिनट के लिए भी खुश रहते हैं दिन भर में, तो मेरा पर्पस अचीव हो जाएगा आपके साथ. और अगर आप 5 मिनट के लिए भी बहुत हैप्पीनेस फील कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, उस चीज मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. जितने समय आप जी रहे हो, खुशी से अगर जी के एंजॉय करके हम जाना सबने है, लेकिन इस सिचुएशन को जितने पॉजिटिवली हम डील कर ले, if we can deal with it positively, sorry, don't mind my language, so we will come out very strong. So I'm trying to have you understand the power
within you to dissolve these problems. If you cultivate in yourself that power, become your own God, the power of your mind, that you can deal with this. You can agree to a disease or you can disagree to it. The more you agree to it, the easier, more vulnerable you become towards it. The less you agree to it, it is more difficult for that kind of difficulty, disease, germs, or virus to come to you. So we have to start doing that as a first step, or kuch exercises jo maine aapko batayi as a next step. On a third step, I can go more detailed on auditing. Okay. Thank you all for giving me this opportunity and listening to me. I can answer a few questions now. Ritu, any experience they like to share about this? Sure. I think now we are open to discussion. Sorry for stopping you all in the middle earlier. I'm so sorry for that. Unfortunately, we have to do it online. Yes, so but it had to be done. So otherwise we wouldn't have been able to finish. But now, yes, please, we can. Ritu, I'll just take a minute. Shelly, you were brilliant. And one of the most striking things which you mentioned about was the reactive time. Reaction to of one particular problem. Yeah. People can react differently. Exactly. So if you react positively, negative will go out. Absolutely. Yeah. I'm really admiring very wise head on young shoulders. You did it brilliant. I'm very impressed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Anybody who wants to ask anything? I want to ask one question. Yeah. Yes, the problem is जैसे आपने बताया कि न्यूज़ आजकल जैसे कोरोना की न्यूज़ आ रही है, जैसे जैसे न्यूज़ हम देखते हैं, and what I feel कि इसका मेरे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर होता है. I can't watch for longer time, but my husband, he can watch for longer time. So that is always, I always feel just either I get away, मैं परे हो जाती हूँ, वहाँ से दूर हट जाती हूँ. कि इतनी देर में क्यों I can't tolerate that. Is it something abnormal between us? No, you would. No, it's a very. What is this? No. I can't tolerate that. इतनी मेरे दिमाग पे ऐसे लगता है जैसे बोझ हो रहा है. बिल्कुल. मेरा दिमाग जैसे उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे न्यूज़ देखती हूँ ना मैं ज़्यादा टाइम, तो मेरे दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ती जाती है. But my husband, he can watch it for longer time. Yeah, so, men do what? This is the difference between men and women. Women are oversensitive to a lot of things. Yeah, your sensitivity. Yes. Hello. It's basically, I think, trying to keep yourself away from the happenings, but still absorbing what is. No, that is not the thing. You have to train yourself to do that. I mean, you are not born. Let me ask. Hello. Yes, please tell me. You want to say something? Yes, Shelly, I want to say something. Okay, yeah, sure. What is the relation between positivity and immunity? Yeah, the positivity and immunity. The mind is taking all the, we function from mind, spirit, mind, and body. Okay. So when your mind is functioning on the conscious level, analytical mind is powerful, then the body translates the information accordingly. In your blood, in your cells, everything gets translated. The message comes from the analytical mind. But if the message is coming from the reactive mind, you lose your immunity. The cells will be weaker, the blood circulation will get stopped, and there'll be blockages in the nerves. तो हमें arthritis problems होती हैं, बहुत सारी nerves की, back aches, slip disc, ये सारी problems जो होती हैं nerves की, वो बहुत हद तक इस वजह से होती है because your analytical mind is not functioning at the time. Your conscious mind is not functioning and reactive mind has taken over. Thank you. Okay. Thank you. हाँ जी, मोना आंटी बताइए. To answer her. Sorry, okay. Even before the virus and all, I never used to watch news क्योंकि news में कभी भी कुछ बढ़िया पॉजिटिव चीजें नहीं आती हैं. जब जॉब करते थे तो बस इसमें कितना बढ़ गया पैसा.
Positive. You know, one day I watched this virus की news, but सुनते गए, and that day मेरा blood pressure इतना high हो गया, मेरी sugar बिल्कुल high हो गई. Everybody thought कि क्या हो गया मम्मी को. हमने कहा हम बिल्कुल नहीं देखना मांगते ये news, क्योंकि you can't do anything and the frustration arises. तो क्या करें क्या ना करें. और बार-बार कह रहे elders 76 years के लग रहा अगले पल मर जाएंगे. So that is why I don't watch. And right. So that's very good. That's very good. To answer the question of the earlier couple, Mrs. Ravinder ने पूछा था ये. To answer her question, which is very normal, क्योंकि देखिए आपका शरीर तो day by day young ही हो रहा है. So obviously the reactive mind can be very overpowering on you. If you have had bad experiences, आपके bad experiences रहे किसी भी life में, किसी भी phase में रहे, चाहे वो childhood के हो, चाहे वो birth के हो, चाहे वो during the marriage हो या after children हो, वो सारे अभी भी आपके साथ हैं. और जब body हमारी weak होने लगती है, obviously we start to lose immunity, you know, because the old age, you know, the cells starts to become weaker. तो अगर आप अपने माइंड को खुद से इनवाइट करके और वीक कर लें तो ऑब्वियसली द प्रेशर ऑन द बॉडी विल बी वेरी वेरी हाई टू सस्टेन बिकॉज द बॉडी हैज टू फाइट द बॉडी इज फाइटिंग द नेगेटिविटी. So I'll recommend कि whoever watches a lot of news, don't watch a lot of it. Just watch it for like half an hour and 15-20 minutes and watch something else. They're very exciting television entertainment channels where you can, if you like something spirituality, dance, movie, anything, but try to just as an exercise मैं आपको देना चाह रही हूँ कि एक week अगर जो मैंने आपको बताया वो आप follow करें कि news एकदम reduce कर दें just to the for the sake of information, क्योंकि आप घर से ऐसे भी कुछ problem solve नहीं कर पा रहे हैं. People on the front line has to do it. Okay. Second thing, अगर आप देख के भी if you're watching it for your knowledge कि ठीक है मुझे ये पता चले क्या होना चाहिए, fine, that part is okay. लेकिन आप देख रहे हैं your mind is taking all the information and your body is already going towards the age which may not be able to sustain too much of negative news, you know, and then it will start affecting the body gradually. थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट होता है, लेकिन नींद में इफेक्ट होगा, कभी भूख नहीं लग रही, कभी इरिटेशन ज्यादा हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इफेक्ट कहाँ से आ रही है, and you start to lose the immunity because the mind is then no more in control of your body. Your reactive mind is in control of your body, and reactive mind contains all the negativity. तो अगर आप सिर्फ एक वीक ये एक्सरसाइज करके देखें, just avoid the news and do the exercise, sit in a room and look at things which are not being a threat to you, जो आपको threaten नहीं कर रही है, या कुछ pleasant सी चीज हो जिसे देख के आपको अच्छा लगे, अच्छा ठीक है मैं ये देखूं, रोज रखा हुआ है, मैं flowers देख लूं, मैं वो देख लूं, मैं बच्चों को देख लूं. Just do it for 1 week and you will write back to me. I can like give you as a guarantee that you'll write back to me how positive you felt within that week. Okay, I hope that answered the question. Anybody else जो कोई कुछ पूछना चाहेंगे? Nobody? Can you answer the question? Thank you so much. It was really very informative and very nice. Thank you. Thank you. Thanks Yes, to all of you. Really, it was good. Very good. For uncle, I will say don't watch the news a lot. Don't worry, uncle has I to have a watch, switch let here. him I watch. can control it. Yeah. Okay. Good. No. You have to be my warrior to help auntie. No, that is what we most sometimes we have that arguments also. How can you switch off everything? I mean, if something not tasting good, I will not say anything. Or to that, I want to say something. Something I want to say, because you know, when maybe you were in a certain profession where you learned a lot to face things comfortably. You know, you confront. We call it a confront. Your ability to face things goes higher and higher with certain training, you know, and certain discipline. So if you are in an army background, for example,
आप ऐसी चीजों को ज्यादा आसानी से ले पाएंगे क्योंकि आपकी उस तरह की ट्रेनिंग, माइंड ऐसा लेवल पे पहुंच चुका है जहां आप उसे बहुत आसानी से ले सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, लाइक आंटी और मदर, यू नो, आई कैन इमेजिन माय मॉम, शी विल आल्सो फील द सेम पेन, यू नो, इफ शी इज वाचिंग अ लॉट ऑफ पेनफुल न्यूज बिकॉज हर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड टू दैट लेवल to face it. So that is also difference to the response which the reactive mind gives. In case of reactive mind आपकी भी हो सकती है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग इस तरह की है that you will be able to take it still okay and comfortably, whereas auntie can't. So you have to balance it. Analytical mind takes over. Yeah. Oh yeah. Yeah, okay, that's very good. That's really nice. Travel channels. Okay. Yeah. घर बैठे ही travel होते रहता है. That is a very nice thing to do because mind is out there. Cooking हम देखते रहते, बनाते नहीं हैं, पर मजा बहुत आता है. बिल्कुल. Like, see, there's nothing wrong in someone like Mr. Kohli. If he can watch a news and not be affected by it, fine, there is nothing wrong with it. But you know, you are still getting the negative information a lot. तो कहीं ना कहीं आप सराउंडिंग में किसी और पे इफेक्ट जरूर होगा. तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार करके देखें. You will see a difference for sure. And use the positivity of your mind to face some more difficult scenarios to deal with your reactive mind rather than facing the news. अगर आप में फेस करने की क्षमता है तो रिएक्टिव माइंड के लिए फेस करें उस एनर्जी को न्यूज के बजाय. All right. Any more questions? Any more discussions? Anybody? It's already time to end. And thank you so much, Shelly. Yeah. I think आपने जो भी आज सारी बातें करी, they were very very helpful. And ये I think सबको अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है और उसे हम जिस तरह से यूज करना चाहें उस तरह से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं. बट हम लोग शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं. बट छोटी छोटी बातों में शायद हमें ये सीख लेना चाहिए. लाइक पर्सनली फॉर मी इट्स ऑलवेज हैपेंड विथ मी कि जब फ्लू चल रहा होता है, सब लोग बीमार पड़ रहे होते हैं और मेरे पास बहुत सारा काम होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ ओ शख्स मेरे पास बीमार पड़ने का टाइम नहीं है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये डी डे निकल जाए, उसके बाद मैं बीमार पड़ सकती हूँ. तो by God's grace, like go one step higher, don't give an option to become sick. I touch wood, by God's grace, like I said, ये मेरे साथ बहुत बार ये होता रहा है. एंड हमेशा मेरे पास एक डेडलाइन होती है कंप्लीट करने के लिए और मैं हमेशा कहती हूँ नहीं यार इतना काम है, I cannot fall sick, इतना काम है इसके बाद. एंड टच वुड, by God's grace, I do get through that thing. जबकि मेरे आसपास सब बीमार होते हैं या कुछ होता भी है तो I kind of, you know, with a mild effect of it, I do get out. So I think it's all the power of mind that we kind of, you know, we can push ourselves to do. Yes. One thing I just want to add to Mr. Kohli, you know, one thing I just wanted to say. What happens is, also for everybody, that what happens is that what happens is कि जैसे reactive mind जो मैंने आपको बताया, the way you storing information, reactive mind ने भी आपके बचपन से लेके अभी तक के painful experience को store रखा हुआ है. Already it is stored. तो जब कोई न्यू चीज ऐड होती है, you never know, things can be very very negative in the way that, you know, you feel कि किसी को आपने bad news देखा, you know, if I see somebody facing an accident, because in my family once there was an accident, so obviously the news of accident can very badly disturb me. So आपको ये रियलाइज करना है कि जो आपके पास ऑलरेडी रिएक्टिव माइंड है उसमें बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी. When you add something similar, it can get triggered, it can give you pain, and it can also give you psychosomatic illness like blood pressure, you know, it can give you arthritis, diabetes. These are psychosomatic illness जो कि रिएक्टिव माइंड की वजह से शरीर पे आती है. ये आपको समझना होगा कि डॉक्टर भी अगर कहेंगे तो जैसे कि इसकी कोई इलाज नहीं है, दवाई आपको जिंदगी भर लेनी पड़ती है. जिस भी चीजों की इलाज नहीं होती है, दैट इज साइकोसोमैटिक, मींस माइंड
Psycho means mind, somatic means body. Mind making the body sick. और ये माइंड कैसे बॉडी को सिक कर रहा है? आपके रिएक्टिव माइंड के माध्यम से. और उस रिएक्टिव माइंड में क्या स्टोर है? आपके अभी तक के पेनफुल एक्सपीरियंसेस प्लस जो आप ऐड करेंगे, what kind of reaction it will give you. It can give you anger, frustration, annoyance, you know, छोटी मोटी चीज में झुलझुलाहट. You never know. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बीपी की प्रॉब्लम आ गई और वो हो भी जाएगी. तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू इट टू कम बैक इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है टू मेक योर कॉन्शियस माइंड एक्टिव, योर एनालिटिकल माइंड एक्टिव, और मेक इट क्लियर ऑफ दीज पेनफुल इमोशन. यू हैव टू बी इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में है, जैसे आर्मी में आपको सिखाया जाता है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ट्रेनिंग, यू हैव टू बी देयर बिफोर यू इवन स्टार्ट द ट्रेनिंग. आपको सो के उठ के उस जगह पे आना पड़ेगा टू बी ट्रेन्ड. Otherwise आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी, and then you will get lot of punishments for that. So similarly यहाँ पे माइंड के ट्रेनिंग में you have to come to present time, अभी के अभी, now at this moment, and then we start the higher level of training to take you toward a spiritual journey of positivity and nirvana. Thank you very much for listening to me. Right, thank you so much, Shelly. Yes. अच्छे से तो शैली आपको फिर से आना पड़ेगा अगले हफ्ते with more to it, and you know अभी तो आपने सिर्फ I'll be honored. I'm honored already. I'll definitely come. Yeah. So yes, तो अभी तो हमने शायद surface भी नहीं touch करा है, because whatever little bit that I have also read up on it, मतलब it is so vast. तो अभी तो आपने बहुत ही शुरुआत ही करी है, तो next week I think we can have you again with more details, and लोग ज़्यादा शायद उसको समझ पाएंगे what, you know, how we can actually change अपना जो हमारा lifestyle है, and and also I want them to write down. If they can give you a write up of what they gained out of it, and when they were experiencing, when I gave them an exercise to go back in their vacation time, happy moment, whatever came to their mind, if they can write down and send it to me, that will be great. चलो great. I think अगर कोई लिख के मुझे भेज सके तो I'll forward it to her. Please, whoever would whatever like to experience they had, just write it down. Yeah. Give us some homework for the homework. तभी पता लगेगा आप लोगों ने ठीक से सुना. Yeah. So anyway, we will do that, and like जो भी लिख के मुझे भेजना चाहे प्लीज भेजिएगा, whatever you've experienced, whatever she has said, and उस हिसाब से आप जो भी लिखना चाहें प्लीज भेजिएगा मुझे. And Shelly, thank you so much, and thank you. Like I said, this was so informative, thank very you very helpful, much for and आई थिंक ये एक साइंस है जो धीरे अगर हम इनकलकेट करेंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा पॉजिटिव हो पाएगी, एंड हम ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल में ला पाएंगे, एंड देन प्रॉब्ली विल बी एबल टू चार्ट द पाथ ऑफ अ लाइफ इन अ बेटर मैनर, एंड बी एबल टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जो भी हमारी लाइफ में अच्छा बुरा हुआ है, एंड लिव मोर इन द हैप्पियर वर्ल्ड एंड फाइंड मोर हैप्पीनेस rather than kind of just focusing on the negative things that have happened. So so I think this is just the beginning. एक आपने नए path पे हमको डाला है, and we hope that we can continue on this. And Mr. Ghosh, thank you so much for introducing us to this. मैं आपको बता दूं कि how we got on to this also. हमारे स्टार्टिंग के शो में ही एक बार मेरी मिस्टर घोष से बात हुई थी किसी एक टॉपिक पे, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस. आई सेड नहीं, हम प्लान कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, 3-4 दिन हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू गेट स्पिरिचुअल टॉक पे हो या डिफरेंट कोई फाइनेंस के टॉक पे हो या ऐसे हो या वैसे हो, बहुत सारी चीजें प्लस फन एंड गेम्स हम लेके आएंगे. That is the time he told me कि मैं भी एक इस organization का part हूँ, and I follow this and all that. So I had not really heard of this, but whatever he told me was so interesting. Then I again got in touch with him. I said अगर आप एक session लेंगे, and then he put me on to Shelly. So this was really एक बिल्कुल ही एक नया new concept जो कि बिल्कुल उभर के आया है.
And thank you so much, Mr. Ghosh, and thank you so much, Shelly, for being here with us. You're welcome. And sparing time for us, and telling us so much and guiding us. And we look forward to another session with you and getting to know more about this topic. Yeah. So, and if they can do it from home, the exercises I gave for a week. Yeah. Let me thank you, Shelly, again, and Ritu. You have put us back to a memory lane. It's a very long. Yeah. Rest of the time we'll start thinking. A lot of things happen in everyone's life. Yeah. Thank you so much, Annie. You're most welcome. I'll be very happy to hear back from you more and write it down, every experience. Chaliye, right. Thank you so much, everyone, for joining in. And जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, organizing. To you, Ritu. हाँ जी. And Gaurav ji, thank you. Thank you. और आपके लिए भी Shelly and Ritu. हो जीवन में मेरे प्यार 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 कहना है आज so sweet. Beautiful ending. Thank you so much. Very nice. And बहुत ही सुंदर. ये हमारी लता Very nice. Very nice. मोना जी, पर इस फिल्म में एक गाना ये बनता है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई. अरे वो बहुत कुछ याद आ गया. So I leave you all with very happy memories. Go back into time, think of all the happy things that have happened, all the good times that we've had with, with our families, in our childhood, with our parents, with, our children. And of course, everything else also, whether it's on the job, whether it's on a holiday, whether it's on a day-to-day basis, sometimes even in unknown place, आप जहाँ shopping करने भी जाते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बहुत प्यारा होता है, कोई अनजान आदमी आपकी हेल्प कर देता है, ये बहुत प्यारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दे जाते हैं कि so anything which gives you happiness, anything with these positive thoughts, आप लोग सोचते रहिए and be happy. And in this lockdown, चाहे आज सुबह हमें लॉकडाउन की न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं लगी, but with Shelly's inputs, I think हम positively इसको देख पाएंगे. And इसको जो भी Shelly ने हमें साइकोलॉजी के बारे में बताया है, उसको लेकर हम लोग हमेशा खुश रहेंगे. And we will continue on this path. So thank you, Shelly. Thank you, everyone, for being here. Thank you, Mr. Ghosh. And I'll see you all tomorrow again at 8 o'clock for exercise. बिल्कुल. सुबह हम अपने दिन की शुरुआत हम लोग एक्सरसाइज से करेंगे. 11 o'clock हम लोग डॉक्टर से बात करेंगे with a new topic जो मैं अभी शॉर्टली अपने पे डालने वाली हूँ. And 4 o'clock we will be with the dietitian looking at some healthy diet again. And 6 o'clock I will see you all again with something absolutely new. Right? Thank you, everyone, and good night, and be happy, be safe, keep smiling. Good night. Yeah. Sleep well, all of you. Sleep well. Have a very good night's sleep tonight. Yeah. Good night. Right. Good night. Thank you Thank so you much. so much, everyone. Yeah. Good night. Good night. Good night.